Hello aspirants, welcome to CSAT FIT course. This is class 25 of CSAT FIT. In this class, we are going to discuss about sum of digits and multiplications of numbers. In last class, we have discussed sum of digits based questions, and in this class, our focus will majorly on multiplication of numbers part. Okay, we will do questions, and through questions only we will try to understand the concepts. So these two topics are gaining importance in the context of changing pattern of the CSAT paper, especially after 2020 and more so after 2023 prelims CSAT paper. So इस type of questions बहुत आ रहा है, so we will focus more on this kind of questions. So questions करते हैं. Through questions only we will try to understand the concept. See, this is question asked in CSAT paper 2021. Okay, CSAT paper 2021. That is, question is, consider the following multiplication problem where PQ into 3 is RQQ, where PQ and R are different digits and R is not equal to 0. Okay, PQ and R are different digits, okay, and R is not equal to 0. So that means what? See, P and Q, okay, we are multiplying with 3, that is giving a number R Q Q, okay, and R is not equal to 0. That means it is a 3-digit number. 3-digit number है RQQ, and PQ is 2-digit number. ठीक है, 2-digit number और 1-digit number भी हो सकता है, because we haven't given कि P 0 नहीं हो सकता है. So it can be 1-digit or 2-digit number. So when it is multiplied with 3, we have to get 3-digit number. ठीक है, so अब obviously this is also 2-digit number, because अगर Q होता single digit multiplied by 3, we won't get 3-digit number. So PQ is a 2-digit number, we can say. ठीक है, so PQ is 2-digit number because अगर मान ले P 0 होता, ठीक है, if P is 0, then Q, that is say P is 0, 0 into Q, take 9, then into 3 would be 27. This is 2-digit number. So however, what we are getting is 3-digit number, right? So now we are getting like this. So now what is given is, say Q multiplied with 3 has to give Q. ठीक है, so that means, so ये कब आ जाएगा? So let's take Q as 0. 0 multiplied with 3, that will give what? So one more thing what we have to know is, that is PQ or any number multiplied with 3. ठीक है, अब जैसे मान ले Q ले लो, here Q take it as 1. ठीक है, then that is 1 into 3 is 3, right? 1 into 3 is 3. So now what here what is given is, अगर Q से multiply किया तो Q ही आना चाहिए. ठीक है, Q has to be the number. So if we take Q as 0, ठीक है, Q as 0, then multiplied with 3 is getting 0, right? ठीक है, so then multiplied, so last digit जैसे RQQ का Q is getting 0, so Q can be 0. ठीक है, then if we take Q as 1, then multiplying with 3, that will give 3. So 1 नहीं आ रहा है. ठीक है, जो नंबर Q से मल्टीप्लाई किया, सो वी हैव टू गेट Q. सो 1 नहीं आ रहा है, तो 1 इज नॉट द Q, 1 नहीं हो सकता. देन टेक Q एज 2. 2 मल्टीप्लाइड विथ 3, ठीक है, वी गेट 6. सो Q नहीं आ रहा है, सो वी हैव टू गेट 2 हियर. सो 2 नहीं आ रहा है, तो Q कैनॉट बी 2. देन 3 into 3 is 9, so that is also not the number. Then Q is 4 into 3 is 12. 12 आएगा. सो लास्ट डिजिट ये Q नहीं आ रहा है. ठीक है, सो 4 कैनॉट बी द नंबर. देन टेक 5. 5 into 3 is 15. सो लास्ट डिजिट वी आर गेटिंग एज 5. ठीक है, सो इफ वी टेक Q एज 5, सो Q 5 है. ठीक है, देन मल्टीप्लाइंग विथ 3 वी आर ऑल्सो गेटिंग 5 हियर. ठीक है, सो ये हो सकता है. दिस इज वन पॉसिबिलिटी एंड 0 is another possibility of Q. Then 6 into 3 is 18, so it is not 6, so 6 भी नहीं हो सकता. Then 7 into 3 is equal to 21, so we are not getting 7, so then 7 is not the value of Q. And 8 into 3 is 24, so this is not 8. ठीक है, 4
so then 9 into 3 is 27, so it cannot be a. So what are the possible values of q is 5 and 0, 5 and 0. Then what we need to get pq, p multiplied by pq into 3 has to be rqqq. Now so possible values of q are, ठीक है, so possible values of q are 0 or 5. so now let's take 0 का लेके q, let's take q as 0 and check out. so if we take q as 0, ठीक है, and p as 1, ठीक है, p1, if we take q is equal to 0, then check with values of p. if p is 1, ठीक है, p cannot be 0, so p is 1, then 1 into q is 0, right? we are taking q as 0, so q 0 into 3, ठीक है, this is not even a 3 digit number, ठीक है, this is not even a 3 digit number, that is 30, but here we have to get 3 digit number, ठीक है, and 0 तो आ रहा है बट 3 डिजिट नंबर नहीं आ रहा है, एंड ये 0 आए तो हमें नंबर कैसे आना चाहिए, क्यू क्यू आर क्यू क्यू, सो द नंबर हैज टू बी 0 0 एंड either r has to be 1 or 2 or something like that number has to be, right? So that means here we are getting 30, so 30 is not rqqq, so p is not 1, then p is equal to 2 लेते हैं, ठीक है, then that is 2 0 into 3 is again 60, it is 2 digit number and it is not in the form of rqqq. then if p is equal to 3, that is 30 into 3 is 90, 2 digit number, then p is equal to 4, then 40 into 3 is 120, this is 3 digit number but 0 0 because rqqq, so two numbers has to be equal to q, ठीक है, 0 0 आना चाहिए, so p is not 3, then if p is equal to 5, so that is 50 into 3 is 150, again this is not, two digits are not same, ठीक है, then I am doing it for everything to explain you the entire concept. If p is 6, otherwise in exam simply we can say कि भाई अगर 60 into 3, 70 into 3, तो no need to do all these calculations also. 60 into 3 is 180. It is also not in the form of rqqq because qq equal नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं. Then if p is equal to 7, then it is 70 into 3 is 210. Again here 2 digits q q nahi form mein nahi, then here p is equal to 8, that is 80 into 3 is 240, again then p is equal to 9, that is 90 into 3 is 270, again this is also not in the form of rqqq, that is the number what we have to get is, if we are taking q is 0, then number has to be 0 0 या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, सो इट इज नॉट, सो q इज नॉट 0, ठीक है, q 0 वैल्यू में कोई भी नो कंडीशन इज पॉसिबल, सो q इज नॉट 0, ठीक है, सो देन वी नीड टू चेक q फॉर q इज इक्वल टू 5, so q is equal to 5, then pq into 3 has to be in the form of rqqq, so q is 5, then let's check for, so p 0 cannot be there, so then 1, if p is equal to 1, then q5 है, 15 into 3 is 45, ये this is 2 digit number, rqqq is 3 digit number, then 25 into 3, ठीक है, this is 75, this is again 2 digit number, so then p is equal to 3, 35 into 3, that is 105, ठीक है, so ये भी नहीं है, then 45, p is equal to 4, 45 into 3, that is 135, again q सेम नहीं है, ठीक है, then 55 into 3, ठीक है, 55 3s are 165, so ये भी नहीं है, then 65 into 3, ठीक है, 65 into 3 is 195, so then this is also not the case because q equal नहीं है, then 75 into 3, 75 into 3 is 225, so ये q not equal, so this is not the case, then 85 into 3 is equal to, 85 into 3 is 5 3s are 15, 8 1 carry हो जाएगा,
and 8 3s are 24, 24 plus 1 is 25. So see here, so this is the case where we are getting RQQ. So this Q, this is Q, okay, so this is P, so we are getting into 3, we are getting some Q into some R is 2 into Q, Q is 5 5, ठीक है. So PQ into 3 is equal to RQQ. So this is the case, right? So and again 95 का भी check करो, 95 into 3 is 285. So here also QQ not equal, so ये भी case कट जाएगा. So PQ into 3 RQQ इस फॉर्म में. So हमें from this we got the values. So values of P R divided by Q. So P plus R divided by Q. So what is P here? So P we are getting is 8 plus R. R is what? 2. R is 2 here from here. Then Q is 5. So Q is 5. So that is 10 divided by 5 is equal to 2. 10 divided by 5 is equal to 2. So again, so we need to have a very good understanding of multiplication. ठीक है. So we must know कि by multiplication में कैसे क्या Q है, किस digit में Q आएगा, ठीक है. Then we need to check all the possibilities. So this is easy question, and it is easy when we understand कि इस तरीके का questions कैसे solve करना है, and we understand how we can do calculations, how we can predict क्या number हो सकता है, ठीक है. So here we can say easily say no need of doing all these things. We know by 1 into 3 है, 1 3 आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है. So and we know 5 into 3 is 15, we get digit. So we need to be very well versed with basic things, that is multiplication, addition, ठीक है, उन सब में करके. And questions ये when we practice these kind of questions, then only we will be able to solve these kind of questions in the exam, ठीक है. So we need to practice these kind of questions more, ठीक है. So then one more question. This is also question asked in CSAT 2021, ठीक है. So this is also question asked in 2021, ठीक है. Since 2020 UPSC CSAT paper is also evolving, ठीक है. So they are not giving direct formula based questions, and they want us to be well versed with basic concepts like addition, multiplication, etc. So let's see the another question asked in CSAT paper of 2021. So consider the following addition problem, ठीक है. Addition देखो, CSAT is more focusing on basic things like addition, ठीक है, and multiplication, then sum of digits, then classification of numbers like prime number क्या है, ठीक है, composite number, etc. इन बेसिस पे काफी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है. एडिशन ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स, एक्सेट्रा. सो वी नीड टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दैट इज 3p plus 4p plus pp plus p is equal to rq2, where p, q and r are different digits, that is p, q and r are different digits. So p is not equal to q, not equal to r, ठीक है. देन ये एडिशन दिया हुआ है, दैट इज 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp is equal to, when we are adding it is getting rq2. So now we know कि भाई अब for which values of p को 4 times add किया, ठीक है, for which digit of p, different digits में क्या क्या possible है, digits are from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, all these 9 digits. For which value of these digits इनको 4 बार ऐड करने से हमें 2 मिलेगा, ठीक है. सो 4 बार ऐड करने से 0 में नहीं मिलता, ठीक है, दैट इज टेक p एज 0, ठीक है, 0 0 0 0 इनको ऐड करना है ना, ठीक है. सो ऑब्वियसली 4p वी हैव टू गेट इज 1 पे नहीं है, बिकॉज 1 इज 4 आएगा, इधर यूनिट डिजिट में 4 आएगा इफ वी टेक 1. सो
not 1 also not possible. Then 2 2 2 2 2 add किया तो we get 8, ठीक है, we get 8. Then 3 we add 4 times, ठीक है, so 3 we add 4 times, what do we get, ठीक है, so we add 3, so 3 into 4 is 12, ठीक है, yes it is possible. So P is equal to 3 is possible. So P is equal to 3 is possible. Then check for 4, that is 4 plus 4 plus 4 is 16, ये 6 आएगा. So 4 नहीं है. Then 5 is not possible, 5 4s are 20, 5 4s are 20. Then 6 is not possible because 6 4s are, that is 6 plus 6 plus 6 4 times is 24. So unit digit में 2 नहीं आएगा. 7 में भी नहीं आएगा because 7 4s are 28, ठीक है. Then 8 S 8 में possible है, 8 plus 8 16, 16 plus 16 is 32, ठीक है. So 2 is possible, so 3 and 2. Then 9 में 36 आएगा, ठीक है. So possible values of P are P is equal to 3 and P is equal to 8. So let's take P is equal to 3 first, ठीक है, फिर उसका sum, ठीक है. Then what we need is what is the arithmetic mean of all such possible sums, ठीक है, all such possible sums का arithmetic mean. So we need to take P3 P4. So P, let's take for P is equal to 3. So for P is equal to 3, that is 3P में 33, then 4P में 43, then PP में again 33, then PP में 33. So if we add, it would be 4 3s are 12, 1 carry, and 3 3 plus 3 6 10 and 14, that is 142, 142, ठीक है. So 142 is the answer, right. So 142 ये आ गया. When then another is P is equal to 8, P is equal to 8, then that is 3P is 38, then 4P is 48, then PP is 88, and PP again is 88. So 8 4s are 32, then 8 8 16, 16 plus 4 20, 20 plus 6 is 26. So question is what is the arithmetic mean of all such possible sums. So possible sums is 142 and 262. Arithmetic mean is what? 142 plus 262 divided by 2, that is arithmetic mean. So that turns out to be 142 plus 262 is 404 divided by 2, ठीक है, that is what? 202, ठीक है. Arithmetic mean is 202. So C, option C, arithmetic mean is 202 is the answer, ठीक है. 202 is the answer. So C is the answer here, ठीक है. So again we need basic understanding, भाई क्या ऐड करने से P का वो 12 आना है हमें. We need 12 और 8 से 32 आएगा, ठीक है, वो कितने पॉसिबल वो आएगा. So from that we get the answer. So questions are basic, but we need to practice these kind of questions, then only we can answer. Basic concepts use करके questions. If we don't practice, it is difficult to solve these kind of questions in exam, ठीक है. So then let's move to next question, ठीक है. So next question, see this is question asked in CSAT paper 2023. Again this is very difficult question, this is not easy, ठीक है. So what I advise students is do these kind of questions towards the end, or best is don't do these questions, ठीक है. अगर आपको टाइम बचा है तभी करना है, otherwise leave these questions in the exam. मतलब especially this kind of question, see earlier 2 questions they are doable, they can be done in the examination hall, ठीक है. This can also be done in the examination hall, but this question is very difficult. So in CSAT paper what marks we need is 75 plus, ठीक है. We need to target 75 plus, ठीक है. For that it is important to know what kind of questions we must do. So first we must focus on those questions which we have practiced, जैसे यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट एंड रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और सम रीजनिंग क्वेश्चंस, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है. देन
few number system का basic questions based on prime number, ठीक है, etc. So all these things, then जैसे time and work, then LCM and HCF, ठीक है, all those questions कोई भी हो सकता है on the topics in which you are confident, you need to focus on those questions first, ठीक है, वो 20 questions you need to identify from maths and you need to do them. फिर reading comprehension and reasoning का questions you will target. So then you will total you have to do 50 plus questions, ठीक है, बाकी the rest of the 30 questions you can leave comfortably. If you can do these 50 questions properly, ठीक है, and we need to practice for these 50 questions, then only we can do it, ठीक है. So let's see the question, ठीक है, we'll solve it, but exam में we won't attempt these questions, ठीक है. So question is, let PP, QQ and RR be two digit numbers where P less than Q less than R, ठीक है. So two digit numbers है where P is less than Q is less than R, ठीक है, P is less than Q less than R. So if PP plus QQ plus RR is equal to TT0, ठीक है, PP plus QQ plus RR is equal to TT0 where TTD0 is a 3-digit number, ठीक है. So TT0 is a 3-digit number ending with 0. So PP plus QQ plus RR is equal to TT0, ठीक है. So where TT is a 3-digit number ending with 0. So ये 0 है, ठीक है, ये TT है and it is 3-digit number. Consider the following statements. Consider the following statements. The number of possible values of P is 5. The number of possible values of Q is equal to 6. So now we know, see, PP plus QQ plus TT is equal to RR is equal to TT0. So this is 3-digit number, ठीक है. अब 2-digit numbers को, ठीक है, so it can be 3-digit number है, so 3-digit number, so it can be 110 and it can be 220 और, ठीक है, मतलब it or 220 or it can be 330, ठीक है, ठीक है. Same two numbers have to be equal and one is 0, ठीक है. It can't be 000 because that would be a 0-digit number, right? So or it can be 440, ठीक है, और so on, जैसे 550 और 660 ऐसा हो सकता है. बट वन मोर थिंग इज, ये 2-digit नंबर है, ठीक है, PP, जैसे टेक 99, ठीक है, देन PQR डिफरेंट डिजिट्स है, ठीक है, PQR डिफरेंट डिजिट्स, दैट इज PQR लेस देन ये है. सो वी कैनॉट टेक, so R can be 99 and QQ can be 88 and PP can be 77. So this is the maximum value. So maximum value of PP plus QQ plus RR, ठीक है, because so देखो P is less than Q and Q is less than R. So if we take 99, so do 77, 88 and 99. So what value you get? So 9 plus 17, 17 plus 7 is 24. 17 plus 7 is 24. Then again 24 plus 2 is 26. So maximum value of 2-digit numbers के साथ it can be 264. So that means to get 330, ठीक है, to get 330 we have to take some 3-digit number, तभी some 330 हो सकता है. So अगर इस केसेस में, पॉसिबल केसेस में, so number cannot be, because this is the maximum number we can take 99, 88 and 77, ठीक है, ठीक है, we cannot take 90, 91 etc. because Q has to be equal and Q has to be less than R, that means 88 one. So maximum possible value with this is 264. So 330 नहीं हो सकता, 430 नहीं हो सकता, that is TT0, and it cannot be 550, 660, 7, ये नहीं हो सकता. So only possible value of TT0 is 110 or 220. So now let's check. So what we need to check is values where PP plus QQ plus
RR is equal to TT0, ठीक है. And second where PP plus QQ plus RR is equal to TT0. So this TT0 is 220 or this TT0 can be 110, ठीक है. That is the possible values, 110 or 220, ठीक है. So now check for कि by PP plus QQ 110 कब हो सकता है. So 110 when it is possible is when that 110 is 55 plus 55, 55 plus 55 is equal to 110, right. So now let's take, so 1 has to be 55, so और बाकी दो है वो प्लस मिलके 55 हो सकता है, ठीक है. सो बड़ा वाला R is bigger than Q and P, so it is 55, ठीक है. So RR is 55, so then sum of these two has to be 55, so it can be, so 44 plus 11, so इनका सम 55 हो जाएगा. So first possible case is this one, ठीक है. Then second possible case is ये 55 आया, ठीक है. Then 33 plus 22 is equal to 55 plus 55, that is 110, ठीक है. Then third possibility is, ठीक है. So 55 का और 55 का क्या possibility है, that is then 44, then 22 ये 22 and 33 ये possible नहीं है, ठीक है. This 22 and 33 plus 55, this is not possible because we know by R is greater than Q is greater than P, ठीक है. So अब देखो इधर Q is 2 आ रहा है, ठीक है. P is 3, so this case is not possible. Similarly ये 11 plus 44 plus 55 ये भी possible नहीं है, ठीक है. So with 55 this is the possible case, ठीक है. Then with 66, ठीक है, with 66 आया तो to get 110, so we need to get 44, ठीक है, because 66 plus 44 is equal to 10 and 10 plus 11 110 आ रहा है. So 66 plus 44, so to get 44 how we can get, that is and again here 3 digit number ending is a 2 digit number है तो 00 भी नहीं हो सकता. So 44 to get 33 plus 11 is 44, ठीक है. So 66 plus 44 is 110. then आता है 66 का again one possible is 22 22 ये फिर possible नहीं है. So with 66 only one possibility is there, ठीक है. So with 66 one possibility is there, that is ये. Then with 77 there can be possible, that is 22 plus 11 33, 77 plus 33 is 110, so 4 possibility आ गया. And except that 88 में 88 plus 22 90 plus 2 is 120, so 22 11 आएगा, so वो भी possible नहीं है. So 110 का possibility values are 4 values, ठीक है. So then with 220 का possibilities, ठीक है, तो 220 we can get is PP, let's take it as 99, ठीक है. 99 plus 99 लिया तो then remaining has to be 121, right. So 121 possibilities क्या है, so 121 is possible with same digits का. So 88 plus 121 है तो 33, 88 plus 133, right. So that will be possible, 121 आएगा. 1 and 12 121. So QQ is 88 plus PP is 33, ठीक है. So this is one possibility. Then plus 99, so 99 plus 121, the possibility is again 77 plus 44 is possible. So 77 plus 44, so this is 220. Then with 99 again 99 plus 66 plus 55, ठीक है. So
10 इधर कम हो रहा है, 10 बढ़ रहा है, so that like that we can carry on, ठीक है. Then 220 again possible, ठीक है, 3 possibilities. Then 220 with 88, with 88 we can check. So with 88 here, so that remaining has to be 131, ठीक है, 131, sorry, 220 minus 88, so 10 minus 8 is 2, then 11 minus 8 is 3, and 132 we have to get. So 132 2 आना चाहिए, ठीक है. So 132 is, let's check with 77, उसके बाद 77, 132 minus 77, so that is 5, and 12 minus 7 is 5, so 55. So 77 plus 55, ठीक है, is 220. So again this one is possible. Then another 88, so plus 66 plus 55, तो ये इधर ऑलरेडी आ गया, so this case is not possible. With 88 only one case is possible. Then plus 77, so 77 है तो इधर 66 55, तो ऑलरेडी 77, तो 88 आएगा, so ये भी possible नहीं है. So this is the last possible case. So 220 also we got 4 possible cases, ठीक है. So now question is what? Number of possible values of P is, so possible values of P is 1, this one 11, 2, 22, ठीक है. Then 11 फिर दोबारा आ गया, ये नहीं है, 11 ये ऑलरेडी आ गया, ये नहीं है. Then P possible value is 33, ठीक है, 33, then 44, then 55, so 55 again repeating, so 55 नहीं है. So possible values of P is 1, 2, 3, 4, 5. So possible values of P is 5. So yes, ये correct है. Then possible values of Q is 6. So now Q is 144. So let's take with this color. So Q is 4. Then 3 again ये नहीं होगा because 33 repeated है. Then 22 again S. Then 88 S, 77 S, 66 S, here 77 again repeated. So possible values of Q is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 is correct. So both 1 and 2 is correct option. Both 1 and 2. Okay. So this is the thing. 2023 का question 43. ठीक है. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer, right? So again a very difficult question, right? It is like you need very good conceptual clarity and it is very time consuming to check all the possibilities. So that's why you must know which questions to leave in the examination hall. Okay, so let's do the next question. Okay, so next question is asked in CSAT 2023, that is a 3-digit number ABC 3-digit number on multiplication with D, when we multiply with D gives 37DD, 37DD, ठीक है, where A, B, C and D are 3 non-zero digits. Non-zero digits is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are 3 non-zero digits, ठीक है. 3 मतलब A, B, C, D are non-zero digits, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनमें से A, B, C, D and D are, ठीक है. Then what is the value of A plus B plus C? What is the value of A plus B plus C? ठीक है, A plus B plus C का value क्या है? That is they are asking. So now let's check. See, when a number is multiplied by C into D, so A, B, C into D has to give 37DD, ठीक है. So ये दो नंबर आना चाहिए, 2 बार D आना चाहिए, ठीक है. So D आना चाहिए. So one thing is, see, one number you can think of is, say the number has to be 3700 और ठीक है, जैसे 0 तो नहीं हो सकता. So it cannot be 0 because
ये नॉन जीरो डिजिट्स है, ABCDR, ठीक है. सो द नंबर कैन बी, ठीक है, इफ वी टेक D as 1 then number has to be 3711, ठीक है. If we take D as 2 then the number has to be 3722. If we take D as 3 then the number has to be 3733. If we take D as 4 then number has to be 3744. If we take number as 5 then 3755, ठीक है. Then if we take number as 6 ये 3766 है, ठीक है. If we take number as 7 it has to be 3777, ठीक है. 8, so 3 D as 8, so these are the possible. So one thing we need to know is this number is somewhere between 3711 to 3799, ठीक है. 3711 to 3799 के बीच में ये नंबर, 3799 3711 इनके बीच में ये नंबर, ठीक है. दिस नंबर हैज टू बी बिटवीन दीज टू, राइट. तो अब देखना है कि कौन सा 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, ऑन मल्टीप्लिकेशन विथ अनदर नंबर विच गिव्स द नंबर ऑफ 3. अब ये देखो, जैसे 999 लेते हैं, ठीक है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. देखिए 999 लेते हैं, सो if you take 999, so 999 and take D as 1, so this is 999, ठीक है. and if you take 999 into say 2, ठीक है, this would be somewhere between 18, 2 9s are 18 plus 1 is 19, 9 2s are 18 plus 1 is 19, 98, ठीक है. अब take D as 6 लेते हैं, ठीक है, that is 999 into 6, ठीक है. I am trying to teach you द बेसिक, ये कैसे गेस वर्क करना होता है, कैसे क्या करना होता है. सो देन 6 9s are 54, then 6 9s are 54, 54 plus 5 is 59, then 6 9s are 54 plus 5 is 59, so 5909 आ रहा है, ठीक है. सो अब 6 नहीं हो सकता, सो द नंबर ये D कैनॉट बी 1, D कैनॉट बी 2 अगर 990s में नंबर ले तो, ठीक है. and D can be 3, अगर 3 लिया भाई 900 into 3 कितना है, ठीक है, that is 2700, right. so अब हमें 37 के पास आना चाहिए, so it has to be 4, ठीक है. 4, ठीक है, 999, ठीक है, into 4 लिया, ठीक है, so that would be 9 4s are 36, 9 4s are 36, 36 plus 3 is 39, ठीक है. then 9 4s are 36, 36 plus 3 is 39, so 3996 आ रहा है, ठीक है, विच इज नियर टू 3744 हमें चाहिए होगा, ठीक है. सो नाउ व्हाट वन थिंग वी कैन अंडरस्टैंड इज भाई अगर 900s के आसपास वाला कौन सा नंबर है, ठीक है, विच कैन गिव अस 3744 में. सो नाउ लेट्स सी. सो अब हमें पता है, सो ABC इंटू डी इज DD, सो 4 है, ठीक है. सो 4 है, इधर भी 4 आना चाहिए, राइट. सो 9 4, ठीक है. 4 कब आएगा, ठीक है. सो यूनिट डिजिट में व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 4, ठीक है, देन व्हेन यू विल गेट 4, सो लास्ट नंबर टू गेट 4, to get 4 it has to be like say it is 1991 टाइप कुछ हो सकता है, या लास्ट डिजिट 1 है इंटू 4 यू विल गेट 4 हियर, राइट. सो या तो 1 है, 2 में नहीं हो सकता, ठीक है. 3 कैनॉट गिव 4, 4 इंटू 4 इज 16, सो 4 नहीं हो सकता. देन 5 इंटू 4 इज 20, सो you won't get 4 as a last digit, so 5 भी नहीं हो सकता. then 6 into 4 is 24, so 6 हो सकता है, ठीक है, या 1 हो सकता है. then 6 हो सकता है, ठीक है. 7 नहीं हो सकता because 7 into 4 is 28, 8 नहीं हो सकता, 8 into 4 is 32, 9 नहीं हो सकता because 9 into ये नहीं, so it can be 6 or 1, ठीक है. 9 something 1 or into 4 or 9 something
6 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, ठीक है. सो नाउ अब ये भी है, वी नो, एंड एक चीज़ ये भी देखना. सो 9 इंटू 36. So one more thing we need to observe here is, I am thinking ये this question, if with better understanding we can solve it in 1 minute, but I am trying to explain you things. So देखो, let's take A B C into D, ठीक है, that is 37 dt, right, 37 dt. Now you know भाई ये लास्ट नंबर है A इंटू डी, ठीक है, A इंटू डी हैज़ टू बी समवेयर नियर 30, राइट, ठीक है, कितना भी ऐड करो, ठीक है, कितना भी बोरो करके आ गया, सो ये समवेयर बिटवीन 37 के पास. अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, A इंटू डी है वो 37 के पास आए. सो दैट इज एक 9 इंटू 4, 9 4 जार 36. देखो 37 के आसपास है. अगर इधर से B से एक कैरी हो गया तो वो आ जाएगा. देन सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 7 इंटू 5 इज 35, ठीक है, 7 इंटू 5 इज 35. देन अदर पॉसिबिलिटी इज 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, ठीक है. सो दैट इज द पॉसिबिलिटी. सो दिस हैज़ टू बी इधर 6 के पास, 9 के पास और 7 के पास होना चाहिए. सो नाउ लेट्स चेक. अगर 6 लिया तो ए बी सी हैज़ टू बी समथिंग बिटवीन 6 ले लो, 600 इंटू 6 ले लो, सो 0 0 36, ठीक है, इस फॉर्म में आना चाहिए. सो अब देख 36 आ रहा है, सो 6 1 6 ले लो इंटू 6, ठीक है. अब ये 6 1 6 नहीं हो सकता, ठीक है, इट हैज़ टू बी 1 और 6 हियर, राइट. सो 6 6 बिकॉज ए बी सी सब अलग है, ठीक है, सो 1 भी नहीं हो सकता, सो 6 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज ए बी सी डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स, सो इट कैनॉट बी. सो इधर ने देखा हमने 1 होना चाहिए या 6 होना चाहिए टू गेट 4 इंटू 4 से. सो इफ वी चेक, ये 9 के आसपास आ रहा है, 9 इंटू 4 इज 36 आ रहा है. सो इफ वी चेक, सो 9 ए एज 9 ले लो, ठीक है, बी एज सो एंड इंटू 4, 9 से मल्टीप्लाई 4 में हमें 3744 के आसपास आ रहा है. सो डी एज 4 ले लो, सो देन इट वुड बी टू गेट 4, सो इट हैज़ टू बी either 1 or 6. So take some number that is 9 6 dash into 4, ठीक है, 4, so then 1, so 4 1s are 4 आ गया. देन इधर क्या आएगा, ठीक है, सो 9 4s are 36 आएगा. सो 36 ये 37 आना चाहिए, ठीक है, हियर वी नीड 37 एंड वी नीड 4 हियर, ठीक है, 4 हियर बिकॉज डी डी आना चाहिए. सो टू गेट 4, ठीक है, टू गेट 14 इंटू 4, ठीक है, कितना आएगा. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, ठीक है, बिकॉज वी नीड 14 हियर, बिकॉज 9 4 ज़र 36 आएगा. अब एक उधर भी तो जाना है, ठीक है, सो 14 इज नॉट पॉसिबल इन 4 टेबल, सो ये 1 नहीं हो सकता. देन लेट्स चेक विथ 9 6, सो 6 4 ज़र 24, ठीक है, एंड हियर वी नीड 37. सो टू गेट 37 what we need is 2 already है, ठीक है, so what we need here is 1 and 12 चाहिए, राइट, सॉरी 12 प्लस 2 14 12 चाहिए. सो वी नीड 12 हियर, दैट इज 4 इंटू 3, ठीक है, सो 3 से 12 आएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 इज 14, ठीक है, 14 से फिर 9 प्लस 2 इज 36, 36 प्लस 1 इज 37. सो 3744 इज द आंसर, 3744, ठीक है. सो इफ वी चेक, सो अब नंबर से चेक किया, सो टेक ए एज 9, बी एज 3, सी एज 6 इंटू 4, ठीक है, दैट इज 6 4 ज़ार 24, 4 3 ज़ार 12, 12 प्लस 2 इज 14, then 9 4s are 36, 36 plus 1 is 37. So 3744 is the answer, ठीक है, 3744 we are getting. So now
question is what is a plus b plus c. So that is 9 plus 3 plus 6 is equal to 12, 12 plus 6 is equal to 18. So 18 is the answer. ठीक है. So these many things we are doing. अगर हमें concept clarity है, then we can simply say कि भाई a b c into d is equal to 37dd. ठीक है, 37dd. So now we must know भाई what are the possible values. जहाँ a into d आया तो 37 आना चाहिए. ठीक है. So a into d. So a and d are 1 2 3 4 a. ठीक है. सो अगर 1 कुछ लिया ये, ठीक है, इंटू 9 लिया तो ये 9 हो जाएगा. सो 1 9 नहीं है. ठीक है, इतना पॉसिबल. देन 2 इंटू 9 बिगेस्ट नंबर वी टेक. ठीक है, दैट इज 18 ओनली. ठीक है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है. देन 3 इंटू 9 यू टेक, दैट इज 9 3 जार 27. तो उधर से b से यू नीड प्लस 10. सो 10 भी पॉसिबल नहीं है. एट मैक्स यू कैन गेट एज ए कैरी इज 9. ठीक है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है. 3 9. देन आता है 4 इंटू 9. ठीक है, सो दैट इज 36. सो 4 इंटू 9 इज 36. सो वी नो कि भाई ये और d मल्टीप्लाई किया तो इट हैज टू बी समवेयर बिटवीन 4 9 और 9 इंटू 4. 9 इंटू 4. ठीक है, देन अगेन अगर 5 इंटू 9 लिया तो ये 45 काफ़ी बड़ा हो जाएगा. सो ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो विथ रेस्पेक्ट टू 9 दिस इज दिस. देन विथ रेस्पेक्ट टू 8 ऑल्सो 8 इंटू 4 इज 32. दिस इज नियरेस्ट, राइट. ठीक है, सो अब ज़्यादा पॉसिबल है. 9 इंटू 4 जार 36 आ रहा है. सो अब 9 इंटू 4 36. ठीक है, सो d ले लो 4, ये ले लो 9. एंड वाई वन मोर थिंग वी नो इज अगर 9 इंटू 4 आ रहा है. ठीक है, इफ द नंबर इज जैसे 400 इंटू 9 आ रहा है. ठीक है, दैट इज व्हाट 0 0 9 4 ज़ा 36 3600. तो ये भी पॉसिबल हो सकता है. सो ऐसा a इज इक्वल टू 4 लेके चेक करो, देन a इज इक्वल टू 9 लेके वेरीफाई करो. सो 9 लिया. ठीक है, 9 bc इंटू 4 डिवाइड. सो लिया तो नाउ b एंड c का वैल्यूज भी यू कैन चेक. सो c का भाई 4 लाना है, इधर dd लाना है बिकॉज d हियर इज 4. ठीक है, d हियर इज 4. सो टू गेट 4 c हैज टू बी 1 और c हैज टू बी 6. ठीक है, सो यही दो पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, ठीक है, अब c लगा के देख लो और फिर b भी आ जाएगा. ठीक है, सो दैट्स हाउ you basically you need to be well versed with multiplication. ठीक है, and then also these questions try to attempt towards the end. ठीक है, because there are many possibilities you need to check, right? So practice these questions, but in the examination hall do these kind of questions towards the end. Rather पहले do other questions which are easily doable, easily calculatable, और देर आर लेस पॉसिबिलिटीज. इधर इतने पॉसिबिलिटीज आएंगे एग्जाम प्रेशर सिचुएशन में, यू वोंट गेट टाइम टू थिंक. सो ये है. देन लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज सो दिस इज आस्क्ड इन 2023 CSAT पेपर एंड दिस इज इजी क्वेश्चन. ठीक है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू डू एंड दिस क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जैसे 2020 एक्सेट्रा में पूछा हुआ है. दैट इज जैसे कंसिडर ये 3 डिजिट नंबर से, कंसिडर 3 डिजिट नंबर XYZ 3 डिजिट नंबर है. व्हाट इज द नंबर? क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर. ठीक है, क्वेश्चन देन स्टेटमेंट. सो क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में क्या होता है? फर्स्ट रीड क्वेश्चन, देन ट्राई टू सॉल्व इट विथ स्टेटमेंट 1. ठीक है, देन अगेन रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व विथ स्टेटमेंट 2. ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, देन क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, देन क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट 2. सो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो दैट वुड बी द आंसर. सो फॉर दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 के साथ पढ़ते हैं व्हाट इज द नंबर. वी नीड टू से भाई व्हाट इज द नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट 3 डिजिट नंबर क्या है वो बताना है. ठीक है, दैट इज स्टेटमेंट सेज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स. दैट इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x y z. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट कि नंबर क्या है.
ठीक है, what is the number, 3 digit number है, what is the number we need to find out. So by this statement can we say क्या number है, ठीक है, that is say x y z is, so where sum is equal to product of the digits, that is say 1 plus 2 plus 3, that is number is 1 2 3, ठीक है, and so sum is what 6 and product is 1 into 2 into 3, so this is also 6 6 6, right, ठीक है, x plus y plus z is equal to x into y into z, so sum is 6 and product is also 6, right, ठीक है, so but can we say 1 2 3 is the only number where ये, but इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना 1 3 2, ठीक है, where 1 3 2 का that is 1 plus 3 plus 2, ठीक है, sum is 6 and 1 into 3 into 2 product is also 6, so 1 3 2 भी number है, then 1 sorry, so 2 1 3, ठीक है, so 2 plus 1 plus 3 ये 6 है, then 2 into 1 into 3 ये भी 6 है, so 2 1 3 is also possible, then 2 3 1 is a number where 2 plus 3 plus 1 6 है and 2 into 3 into 1, ठीक है, that is also 6, so ये भी possible है, then 3 2 1 and 3 1 2, ठीक है, ये भी possible है where sum is 6 and product is also 6, so there are 1 2 3 4 5 6, so 6 possible numbers are there, 6 possible numbers, so by using this statement we cannot say by number क्या है, ठीक है, because there are many possible numbers, ठीक है, where sum of digits is equal to its product of digits, ठीक है, so 3 digit numbers, or we can say 3 digit number can be 111, ठीक है, 3 digit number, हमें ये नहीं पूछा कि सारे डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, 111, ठीक है, एंड 111, ठीक है, सो दैट वुड बी 1 plus 1 plus 1 is 3 and 1 into 1 into 1, सो ये दोनों इक्वल नहीं है, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं है, और वी कैन से 3 digit number as 3 digit number as -1 plus -2 plus -3, so that would be -6 and -1 into -2 into -3, so it is -6, so ये भी हो सकता है, ठीक है, another number is that is another 3 digit number can be -123, ये 3 digit number, so let's check, -123 नहीं है, so इसमें -1 -2 -3 नहीं होगा, so let's don't go that way also, उधर भी, so 6 possible numbers with sum with statement 1 are possible, so by statement 1 we cannot say what is the number, then statement 2, the number is divisible by sum of digits of the number, so the number is divisible by sum of digits, जैसे 1 2 3, सो नंबर आ गया हमें भाई, ऐसा नंबर से, ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ डिजिट्स, जस्ट टेक 1 2 3, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इज 6, सो 1 2 3 is divisible by 6, no, 6 2s are 12 and 3, this is not divisible, ठीक है, then let's check 1 3 2 का, 132 divided by 6, so that is s, it is divisible, 132 6 are, so 6 2s are 12 and 1 2 6 2s are 12, so divisible है, remainder 0 आ रहा है, so this is divisible, so one such number is 132, ठीक है, then let's take 213, ठीक है, so third number that is 213 is divisible by 6, no, it is not divisible, 213 6 6 3s are 18 3 3 33, ये not divisible है, ठीक है, then 231
231 is also not divisible. 231 divided by 6, sum of digits is 6. 6 3s are 18, then 5 1, so AB not divisible. Then 321 divided by 6, so 6 5s are 30, then 2 1, so AB not divisible. Then 312 divided by 6, 6 5s are 30, 1 2, 6 2s are 12, so remainder 0. So 6 ये divisible है. So 312, 132 and 312 ये numbers है, these are divisible by, these are the numbers which are divisible by 6, sum of the digits. So here also we cannot say what is the number exactly. Two numbers possible है, ठीक है. So we cannot say. So by using statement 1 also we are getting 6 numbers. So we cannot say. The question can be answered by using one statement alone, but cannot be answered using other statement alone. No. By using both statements, the question can be answered using either statement alone. No. The question can be answered using both the statements together, but cannot be answered using, no. Even by using both the statements together also we are getting two numbers. Okay. And again the question cannot be answered even by using both the statements together. Yes. Even by using both the statements together also we are getting two possible numbers, that is 132 and 312. So option D is the answer. Option D is the answer, right? So this question is easy question, we can know. So because ये easy इसीलिए बनता है, ठीक है, because this statement sum of digits of the number is equal to product of the digits, this statement is asked in every alternative year, ठीक है. So there is question in 2021 also based on this thing, ठीक है. Then there is question in 2020 also, ठीक है. So this statement is very important. Number where sum of digits is equal to product of digits, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1 2 3, ठीक है. That is 1 3 2, then 2 1 3, 2 3 1, ठीक है, 3 2 1, 3 1 2. So all these numbers ये आना चाहिए. Okay. So yeah. Then let's see next question. That is question asked in CSAT paper 2023. ठीक है. That is D is a 3-digit number. D is a 3-digit number such that ratio of the number to the sum of its digits is least. ठीक है. D is a 3-digit number. Say D is equal to x y z. ठीक है. X y z 3-digit number such that ratio of the number to the sum of its digits is least. Ratio of number that is x y z by sum of its digits to the sum of its digits. Sum of its digits is x plus y plus z. Sum of its digits is least. मतलब जब ratio है d is number, that is the ratio of the number that is x plus y plus z, x y z by sum of its digits is ये होना चाहिए least. When उसका ratio किया, that is then what is the difference between the digits at the 100 place and digits at units place of D. ठीक है. Difference between digits at the hundreds place and digit at the units place, ठीक है, उस कैसे नंबर का. So now this can be written as, ठीक है, अब ये आ गया x y z, ठीक है, नंबर टू द रेशियो ऑफ इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स आ गया. सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज x y z कैन बी रिटन एज 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है. सो 100x प्लस 10y प्लस z बाई x प्लस y प्लस z, ठीक है. इनका रेशियो किया तो इट हैज़ टू बी लीस्ट, ठीक है. अब हमें पता है, ठीक है. सो इज ए 3-digit नंबर सच दैट 3-digit नंबर है, ठीक है. सो टू गेट द रेशियो लीस्ट, सो टू गेट द रेशियो लीस्ट, ठीक है, टू गेट द रेशियो लीस्ट वी नो कि भाई ये लीस्ट आना है, ठीक है. So to get this ratio least, so we need to get this least, ठीक है, this least and this as highest, ठीक है. ये least होना चाहिए and ये highest होना चाहिए, ठीक है. and अगर
ये लीस्ट आएगा, मतलब जैसे मान ले 10 डिवाइडेड बाय 9, देन यू विल गेट द लीस्ट वैल्यू दैट इज 0.1. अगर 10 डिवाइडेड बाय 2 होता सो यू विल गेट 5. ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 1 होता यू विल गेट 10. ठीक है, सो हमें पूछा है भाई रेशियो है, ये लीस्ट आना चाहिए. सो टू गेट लीस्ट इधर तुम्हें लीस्ट वैल्यू आना चाहिए. जैसे 2 डिजिट नंबर में अगर 99 लिया, ठीक है, ठीक है, देन 9 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 10 पॉइंट समथिंग. ठीक है, यू विल गेट 10 पॉइंट समथिंग. और 90 डिवाइडेड बाय 9 किया, यू विल गेट 10. सो टू गेट लीस्ट यू हैव टू टेक, ये 2 डिजिट नंबर है, ये जितना कम हो सकता है उतना कम लेना है. देन ये जो 1 डिजिट नंबर है या कुछ भी नंबर है, नीचे वाला नंबर है, ठीक है, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा लेना है. ठीक है, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 9 यू विल गेट 0.1 पॉइंट समथिंग, राइट. सो वही 10 divided by 10 you will get 0. ठीक है, you will get 0. So here also we need to make sure ये least 3 digit number होना चाहिए. ठीक है, and sum of digits ये highest होना चाहिए. ठीक है, highest. Now to get इधर least number है आना है, so 3 digit number that has to be starting with 1. ठीक है, 1 because मान ले 9 ले लिया. ठीक है, 9 ले लिया, 9 लिया. ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 लिया. ठीक है, या दूसरे नंबर है 1. अब ये भी हाईएस्ट आना है, तो ये डिजिट तो यूनिट डिजिट तो 1 ले लिया. देन मेक श्योर कि जो बाद वाला डिजिट से जो x प्लस वाई जो नीचे हाईएस्ट लाने के लिए मेक श्योर ये हाईएस्ट ले लो. सो दैट इज y 199 ले लो. ठीक है, देन 1 प्लस 9 प्लस 9 that is 199. Sum of digits is 1 plus 9 plus 9. So that is 199 divided by 19. ठीक है, so 199 divided by 19. 199 divided by 19 you will get some value. ठीक है, 199 divided by 19. ठीक है, so you will get some value. So this case this would be the least. ठीक है, in this case you will get the least because so ये इधर least possible value है. ठीक है, and ये highest लाने के लिए we took y and z. नहीं तो ये भी ले सकते हैं 101. ठीक है, but ये क्या आएगा, ये highest नहीं आएगा तब that would be 1 plus 0 plus 1. ठीक है, that would be 101 divided by 2. so this again would be 50 के आसपास आएगा. सो 50 हाईएस्ट नहीं है. अगर वही 199 डिवाइडेड बाय 19 करता, ठीक है, देन यू विल गेट 19 1s are 19. ठीक है, देन 19 zeros are 19 10s are 190. ठीक है, 10.9.0 सो 10.4 कुछ आएगा. ठीक है, 4 so on कुछ आएगा. सो दिस वुड बी द लीस्ट रेशियो लीस्ट तब आएगा जब 199 1 प्लस 9 प्लस 9 लिया जाए. ठीक है, सो ये अगर सिमिलर कुछ और नंबर ले लो, इफ यू टेक से 999 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 प्लस 9 लिया. ठीक है, दैट इज 999 डिवाइडेड बाय 27. ठीक है, दिस वुड बी 27 999. सो देन इट इज 27 3s are 81. so then 8 1 9 189. so 7s are 189. so 27 so 37. ठीक है, so 0. so 37 आ रहा है. so अब देखो ये 37 ये लीस्ट है, 10.7 लीस्ट है या 37. so 10.4. so now question is what is the difference between digit at the 100 place and the digit at unit place. digit at 100 place and unit place is 9 and hundreds place is 1. so 9 minus 1 is equal to 8. ठीक है, 8 is the answer. so hundreds place and units place का difference क्या है. so difference is 8, मतलब बीच में 8 numbers है. ठीक है, so that is the difference. so option C 8 would be the answer. so अब ये भी conceptual question है. we must know कि भाई ऐसा ratio करना है तो this has to be the least and this has to be the highest. so
अगर क्वेश्चन ये समझना भी काफ़ी मुश्किल है. सो अगेन दिस क्वेश्चन ऑल्सो डू इट टूवर्ड्स द एंड. बट ये कॉन्सेप्ट वी नीड टू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आ सकता है. यूपीएससी हैज़ बीन आस्किंग. अगर प्रैक्टिस किया उन्हीं कॉन्सेप्ट बेसिस पे आ गया तो जो हो रहा है हो करना है, अदरवाइज लीव इट. ठीक है. सो देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. See, this is question asked in 2021 and similar model question is asked again in 2022 also. ठीक है. 2022 same type of question. So let's solve these two questions also. ठीक है. I know, see, this class questions are very tough. I have deliberately taken because अगर कम से कम क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ये क्वेश्चंस करने से थोड़ा बेसिक्स समझ में आ जाएगा, विच विल हेल्प यू इन सॉल्विंग ईजियर क्वेश्चंस. ठीक है. और नहीं है तो मुश्किल क्वेश्चंस भी है भाई, ये क्वेश्चन मुश्किल है कैलकुलेट करना. सो एग्जाम में यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस छूना नहीं है. ठीक है. अगर इफ यू अंडरस्टैंड भाई दिस मॉडल ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, दिस मॉडल ऑफ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, देन यू कैन यूज दिस नॉलेज इन नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. ठीक है. सो दैट्स द पर्पस. अगर हो सकता है यू माइट बी फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, आफ्टर सीइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट नो नीड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आर डिफिकल्ट, so that you can leave these kind of questions in the examination hall, or you can focus on easy type of questions. जैसे यूनिट डिजिट का क्वेश्चन से कितना ईजी है, एंड रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन से दे आर ईजी. ठीक है. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम्स, प्राइम नंबर्स एक्सेट्रा बेस्ड क्वेश्चंस आर ईजी. सो यू नीड टू फोकस ऑन ईजी क्वेश्चंस, बिकॉज इन एग्जाम you can clear the exam only by solving easy questions. Easy question is also 2.5 marks and difficult question is also 2.5 marks. So you need to know क्या questions easy है, क्या questions मुश्किल है. To understand that ये है. And these questions I can say you 99.99% aspirants, ठीक है, they cannot solve these questions. ठीक है. Especially the questions we are discussing in this class, ठीक है, except 3-4 questions, but I still want to discuss because I want you to know कि इस questions को difficult है, needs to be skipped in the examination hall. ठीक है. So let's do these questions. That is, consider all 3-digit numbers without repetition of digits obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3. Let S be their sum. ठीक है. Consider all 3-digit numbers. Consider all 3-digit numbers. Consider all 3-digit numbers without repetition of digits obtained by using 3 non-zero digits. 3 non-zero digits से digits, that is non-zero digits are what? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 non-zero digits है. ठीक है. non-zero digits से non-digits which are multiples we obtain using 3 non-zero 3-digit numbers are obtained. See, by using 3 non-zero digits we have obtained 3-digit numbers. See, let's take ये 3 digits use करके 3-digit numbers लेते हैं. ठीक है. we can use any 7 8 9 4 5 6 या 7 1 2 etc. but let's take these 3-digit numbers. ठीक है. 3-digit numbers, that is 1 2 3. ठीक है. या let's take 3-digit numbers as XYZ. ठीक है. XYZ. ठीक है. so इनका यूज करके 3-digit numbers बना रहा है, कोई भी इनमें से कोई भी 3 यूज करके. so XYZ नंबर बनाया. so XYZ नंबर. ठीक है. so XYZ can be written as 100x plus y plus z. then दिया हुआ. ठीक है. ठीक है. all 3-digit numbers obtained using 3 non-zero digits are multiples of 3. multiples of 3 means that means
मल्टीपल्स ऑफ 3 मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, ठीक है, देन ओनली दे विल बी मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, देन ओनली दे विल बी मल्टीपल्स. सो मल्टीपल्स ऑफ 3 इज व्हाट, ठीक है, दैट इज x y z must be multiples of 3, that is multiples of 3 or 6. X plus y can be 3, 6, 9, ठीक है, when x plus y plus z is equal to 3 or 6 or 9, then only these numbers are multiples of 3. We have seen in divisibility rule. Divisibility rule of 3 क्या है, 3 is numbers sum किया तो that has to be multiples of 3, 6, 9, 12 so on, ठीक है. सो x प्लस वाई प्लस जेड या तो 3 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, या तो 12 ऐसा होना चाहिए, ठीक है. देन s बी देयर सम, s बी देयर सम, सम ऑफ डिजिट्स, जैसे x y z 3 डिजिट्स लिया, ठीक है, s इज व्हाट, s इज इक्वल टू सम ऑफ दोज 3 डिजिट्स से जो भी नंबर्स बन सकता है, दैट इज x y z प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई प्लस, ठीक है, देन वाई जेड एक्स प्लस वाई एक्स जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस जेड वाई एक्स, ठीक है, ये है एस. लेट एस बी देयर सम, ठीक है, जो इन डिजिट्स से कोई भी 3 डिजिट्स लिया, 3 डिजिट्स का नंबर बनाया, ठीक है, उन जो भी नंबर्स बनेगा उसका सम है s, ठीक है. सो s, देन s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74, s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, ठीक है. सो अब s का फाइंड आउट करना है. सो s इज व्हाट, एक्स वाई जेड. सो एक्स वाई जेड कैन बी रिटन एज 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है. देन अनदर इज x z y इज इक्वल टू 100x plus 10z plus y, then yzx is equal to 100y plus 10z plus x, then yxz is equal to 100y plus 10x plus z, then zxy is equal to 100z plus 10x plus y, then zyx is equal to 100z plus 10y plus x. सो अब इन सब को ऐड किया तो क्या आएगा, ठीक है. सो 100x का देखो, 100 100 200, देन 210 220 221 एंड 222. सो 222x, ठीक है, प्लस again y be 222y. We have already seen this in digit interchange concept. Then 222z, ठीक है, इन सब का ऐड किया तो ये s है. सो s इज इक्वल टू, इन सब का ऐड किया तो वी आर गेटिंग लाइक दिस. सो s इज इक्वल टू 222 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है. सो एंड हियर 222 कैन बी रिटन एज 222, देखो अब दिया है s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74, ठीक है. अब 74 टर्म्स में लिख सकता है. सो 74 इंटू 3, 74 3s are, so 4 3s are 12, 7 3s are 21, 21 plus 1 is 222 into x plus y plus z, ठीक है. 74 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है. 74 ये. सो अब ये देखो s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74. s वी नो जो भी सम है तो वो इस फॉर्म में लिख सकता है. सो इट वुड बी डिविजिबल बाई 74, ठीक है. s इट वुड बी डिविजिबल बाई 74. देन एक्स वाई जेड इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, और मल्टीपल्स ऑफ 3 लिया, ठीक है, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का मल्टीपल्स में होगा. सो देन इट वुड बी 74 इंटू 3 इंटू इधर 3 और 6 और 9 जो भी आएगा. सो जो भी आएगा, ठीक है, इट वुड बी मल्टीपल ऑफ 9. जैसे 3 इंटू 3 आएगा, ठीक है, दैट इज 9 आएगा. सो 3 इंटू 6 is 18 which is multiple of 9. 3 into 9 is equal to 27 again which is multiple of 9.
So when it is multiple of 9, s is divisible by 9 also. So option C is the right answer. So that's how we need to calculate. So ये है कि क्वेश्चन समझना है, then it would be easy to solve this question. So अब let's take this with example also. ठीक है, let's take with example. So x y z, let's take it as 1 2 3. ठीक है, so x y z है, ये 1 2 3 नंबर्स लिया, x is 1 ऐसा, so 3 डिजिट्स लिया, द 3 डिजिट्स वी आर टेकिंग एज 1 2 3. क्वेश्चन यही दे दिया ना, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स. ठीक है, ऑल 3 डिजिट नंबर्स. ठीक है, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स obtained using 3 नॉन जीरो डिजिट्स. सो 3 नॉन जीरो डिजिट्स वी आर टेकिंग एज 1 2 एंड 3. ठीक है, सो 3 डिजिट नंबर्स 1 2 3 यूज करके 1 2 3 बन सकता है, देन 1 3 2, then 2 1 3, then 2 3 1, then 3 1 2, then 3 2 1. ठीक है, these are the non digits. s is what obtained are multiples of 3. multiples of 3 है तो sum 1 plus 2 plus 3 is equal to 6 है, 6 is multiple of 3, so ये multiples of 3 भी है. then let s be their sum. so sum add किया सबको. ठीक है, so that will give s. so s is equal to 1 3 4 7 9 12. ठीक है, 12 1 कैरी हो जाएगा, देन 1 2 3 4 4 प्लस 3 4 प्लस 3 is 7 8 8 9 10 11 12 13. सो ये हो जाएगा 13. ठीक है, देन 3 1 प्लस 3 is 4 4 प्लस 3 7 8 9 10 11 12 13. सो ये 13 32 आया. सो क्वेश्चन इज s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74. सो 74 करो, 13 32 डिवाइडेड बाई 74. सो 74 ones are 74. सो माइनस किया तो 9 5 2, सो 592. देन 74 into 8 is 74 8s are 592. so that is 0. ठीक है, so 74 is 132 is divisible by 74. then another is s is always divisible by 9. so s is 132 divisible by 9. देखो, so 9 ones are 9 4 3, so 9 6 9 4s are 36. so फिर इधर आ गया 7 7 2, so 9 8s are 72 0. so ये भी 9 से भी divisible है. so the number is divisible by s is, that is sum of all the numbers formed by x y z. ठीक है, which are multiples of 3. multiples of 3. ठीक है, वो हो जाएगा, तो that would be divisible by 74 and 9 also. ठीक है, so ये theoretical way में करने का, ये examples से साथ कर सकता है. so this also we can easily solve, but the main problem here is we need to be aware of this model of question. ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है 2021 में भी UPSC has asked and in 2022 also they have asked. let's check 2022 वाला question. ठीक है, 2022. so the question is let a b c represent distinct non-zero digits. so a b c are distinct non-zero digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इनमें कुछ भी हो सकता है, ए बी दे डिजिट्स है. लेट x is the sum of all possible 3 digits numbers formed by a b c without representation. so x is equal to, ठीक है, sum of all possible 3 digit numbers formed by a b c without repetition. ठीक है, let x is equal to sum of all the numbers all the possible 3 digit numbers formed by
A, B, C. So x is equal to all the numbers possible by A, B, C. So A, B, C का कोई भी 3 digit numbers लो. So let's take A1. ठीक है, 3 numbers are 1, 2, 3. ठीक है. So x is equal to all the sum of all possible 3 digit numbers formed by A, B, C. ठीक है, all the possible. So that would be A, B, C. ठीक है, plus A, C, B plus B, A, C plus B, C, A plus B, C, A plus C, A, B प्लस सी बी ए. ठीक है, यही है x. x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय ए बी सी विदाउट रिपीटिशन. ठीक है, ए बी सी यूज करके कितने भी पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं वो सम में वो x है. सो नाउ वी नो भाई ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट 100a प्लस 10b प्लस c. देन ACB is what? ACB is 100A plus 10C plus B. Then BAC is 100B plus 10A plus C. Then BCA is what? 100B plus 10C plus A. Then CAB is equal to 100C plus 10A plus B. Then CBA is equal to 100C plus 10B plus A. So अब ये x. ठीक है, then the 3 digit least value of x is 1332. ये सब पूछा. So x इन सब को ऐड किया तो x आएगा. So x is what? So we know 100a, 200a, 210a, 220a, 221a and 222a. So 222a plus 222b plus 222c. See, that is 222 into a plus b plus c. That is x. Then question is what? 4 digit least value of 4 digit least value of x is 1332. Then 3 digit greatest value of x is 888. So now we know it is 222 into 3 digit greatest value of x is 888. 4 digit least value of x, that is x is equal to. ठीक है, अगर कोई 4 डिजिट का लीस्ट वैल्यू हो, ठीक है, 4 डिजिट का लीस्ट वैल्यू दैट वुड बी 1322. सो लीस्ट वैल्यू कब आएगा? ठीक है, व्हेन ए बी सी आर 1 2 3 होगा. ठीक है, व्हेन ए बी सी आर 1 2 3. सो तब व्हेन ए बी सी आर 1 2 3 दैट इज 1 + 2 + 3. सो दैट इज 222 into 6. ठीक है, सो 222 into 6 जब आएगा. सो 222 into 6, 6 2s are 12, 6 2s are 12, 1 13, 6 2s are 12 plus 1 13. So अब देखो 4 digit least value of x is 1322. 4 digit least value of x is 1322. So 1322 हो जाएगा. x is equal to 1332. Sorry, 1332. ठीक है, 1332. So 4 digit least value of x is 1332. So 4 digit least value is this only. So when least value is 1, we take ABC as 1 2 3, then only we get least value, right? So अगर नहीं है तो 987 भी ले सकता है. ठीक है, so अगर 987 लिया वो हाईएस्ट वैल्यू, then 3 digit greatest value of x is 888. so अब ये हो ही नहीं सकता because विदाउट रिपीटिशन दिया है. ठीक है, सो द लोवेस्ट नंबर इज 1 2 3. अगर वही 222, ठीक है, रिपीटिशन होता दैट इज 1 + 1 + 1 होता. ठीक है, दैट वुड बी 222 into 3 होता, दैट इज 666 होता. अगर वो रिपीटिशन भी नहीं है. ठीक है, सो लीस्ट वैल्यू इज द 3 digit greatest value of x is x. 3 digit greatest value तो है ही नहीं. द लीस्ट वैल्यू ही
1332 है, ठीक है. दैट लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 4 डिजिट नंबर, सो दिस वन इज इनकरेक्ट, ठीक है. सो द ऑप्शन इज ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है. ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है. सो ये है. इफ वी वांट टू टेक एग्जांपल, सो विथ एग्जांपल आल्सो वी टेक जैसे 1 2 3, ठीक है. देन 1 3 2, देन 2 1 3, देन 2 3 1, देन 3 1 2, 3 2 1, ठीक है. इसको ऐड किया, सो दैट वुड बी 3 3 plus 4 7 7 8 9 9 plus 3 is 12. देन फिर ऐड करो, 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is 6, 7 10 13, ठीक है. देन 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10 11 12 13, so 1332 is the least, the 4 digit least value of x. X is what, sum of all the digits, possible digits with numbers, so least possible value यही है. नहीं तो भाई अगर दूसरा नंबर से दैट इज ले लो ये, अदर देन टेकिंग these three digits, take these three digits, ठीक है. दैट इज 2 3 4, ठीक है, 2 4 3, ठीक है. देन 3 2 4, 3 4 2, देन 4 2 3 एंड 4 3 2. सो इन सबको ऐड करेगा तो कुछ वैल्यू आएगा. सो वो लीस्ट 4 डिजिट नहीं है, वो 4 डिजिट और बड़ा होगा इनसे, ठीक है. देन 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, भाई x का लीस्ट वैल्यू यही है, सो दिस वुड बी इनकरेक्ट, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है. सो सेम मॉडल ऑफ क्वेश्चन एंड दिस मॉडल इज ऑल्सो, ये वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, राइट, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है, दिस मॉडल ऑफ क्वेश्चन. सो रिवर्स डिजिट कॉन्सेप्ट में, सो दैट्स वाउ. सो क्वेश्चंस इज इजी, ठीक है. थोड़ा लेंथी टाइप लग रहा है बट ये इजी है वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो इसीलिए you need to do this kind of questions because these questions are doable in the examination hall also. So yeah, so that's it for today's class, ठीक है. So I know this class is difficult but I want to do these questions because UPSC देखो कितने questions पूछ रही है. So at least we must be able to solve important questions और easy questions अगर इन टॉपिक से पूछा तो, ठीक है. So जैसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस can be solved, this question can be solved, right. So we need to focus on those questions. So that's it for today's class. With this I have done this, and apart from this I will be doing questions also. Once the course is over, once the CSAT FIT course is over, I will be solving questions asked in टेस्ट सीरीज लाइक विजन IAS का CSAT टेस्ट सीरीज और फोरम IAS का CSAT टेस्ट सीरीज और सम अदर इंस्टीट्यूट्स का टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चंस ऑफ CDS एंड UPSC CAPF, ठीक है, EPFO, ठीक है, SSC CGL, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस. सो विद दैट यू विल बी प्रैक्टिसिंग मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. सो यही है. That's it for today's class. See you in the next class. Bye.